Hello everyone. Today we will continue our lesson, means the previous lesson. In previous lesson we had discussed the number system, decimal number system. In this we are going to continue with our decimal number systems example. Okay, so let's consider the following number 132. Okay, the 132. The decimal number 132 consists of the digit 2 in the unit place, okay, or the unit position. 3 in the 10th position and 1 in the hundreds position, okay, whose value can be written as. इनकी वैल्यू हम इस तरह से लिख सकते हैं क्योंकि हमें डेसिमल नंबर को फॉलो करना है, दैट इज़ वाई हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे इनका. ओके, सो 1 को 1 इंटू 10 की पावर 2 क्योंकि ये 100 प्लेस पे है, ये 10th प्लेस पे, दैट इज़ वाई 3 इंटू 10 की पावर 1 एंड 2 इंटू 1 की पावर 0, that is it's on a unit place. Okay, so 10 की पावर 2 means 100, 10 की पावर 1 means 10 and 10 की पावर 1 की पावर 0 means 1. So this is 100, this is 30 and this is 2 and the combined number is 132. This is the example of decimal number system. The next number system is binary number system. Okay, so what is binary number system? Okay, a computer cannot understand the instruction given in English. Computer English में instruction नहीं समझ सकता है. It can only understand and execute instructions given in the form of 0 and 1. ये सिर्फ 0 और 1 के फॉर्म में जो instructions देते हैं उन्हें ही समझ सकता है. And this 0 and 1 number is called binary numbers. Okay, so a computer can store information in the form of 2 digits 0 and 1. 0 और 1 के फॉर्म में ही इंस्ट्रक्शन को अंडरस्टैंड करता है. These digits are called binary numbers. इन डिजिट्स को हम बाइनरी नंबर कहते हैं because it has only 2 digits. Binary number has only 2 digits 0 and 1. That is why the base of binary number is 2. Okay, so it is the binary number. Now we are going to discuss our next topic, which is conversion of decimal number to binary number. हम decimal number से binary number में किस तरह से convert कर सकते हैं, हम उसके बारे में अब discuss करेंगे. Okay, so there are some rules to convert decimal into binary. decimal number को binary में convert करने के कुछ rules हैं. These rules are: divide the decimal number to be converted. जो भी नंबर आप कन्वर्ट करना चाहते हो उसको डिवाइड करना है विद द बेस ऑफ 2 से करना है. क्यों? बिकॉज वी आर गोइंग टू कन्वर्ट डेसिमल नंबर टू बाइनरी. डेसिमल का बेस कितना था, जो भी नंबर हम लिखेंगे उसका बेस यहाँ पे आएगा और उसको हमको जिसमें कन्वर्ट करना है उसका बेस यहाँ पे आएगा. हमको डेसिमल नंबर, वी आर गोइंग टू कन्वर्ट द डेसिमल नंबर विच इज द बेस 10 टू बाइनरी नंबर विच इज द बेस ऑफ 2. सो डिवाइड द डेसिमल नंबर टू बी कन्वर्टेड. जो भी नंबर जिसका भी कन्वर्जन आपको करना है उसको बेस ऑफ 2 से डिवाइड करना है. द सेकेंड वन इज टेक द रिमाइंडर, उसका रिमाइंडर रखना है एंड डिवाइड द कोटेंट अगेन बाय 2. उसका रिमाइंडर साइड बाय साइड रखना है एंड देन जो कोटेंट बचेगा उसको वापस से डिवाइड करना है 2 से. एंड ये रिपीट द स्टेप 2 अंटिल द कोटेंट बिकम 0. इस स्टेप को तब तक रिपीट करना जब तक कि कोटेंट 0 नहीं बचता है. ओके, सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल एंड here is the example. Conversion of the decimal number to binary. Okay, the question is convert the decimal number 56 into binary number. So 56 को हमने यहाँ लिखा, इसका बेस 10 है, मीन्स ये डेसिमल नंबर है, इसको इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है. जो आंसर आएगा वो यहाँ पे आएगा, उसका बेस 2 रहेगा, दैट इज वाई इट इज अ बाइनरी नंबर. ओके, सो हियर इज द आंसर 56. Okay, 56 को 2 से डिवाइड किया, then we got 28. Okay, let's see the example. If we divide 56, sorry, okay, if we divide 56 by 2, then we got 2 2s are 4 and here is the 16, 2 8s are 16. Okay, so here is the remainder 0, means remainder is 0 and the quotient is 28. Here again we divide 28 by 14, then the remainder is 0 and quotient is 7. Sorry, let's understand again. Okay, so 2 7s are 14, remainder is 0, 14 is there. By which way? In this way we can convert the decimal number into equivalent binary number.
2 को 7 से 7 को 2 से डिवाइड करेंगे, देन 3 इज देयर, रिमाइंडर इज 1 बिकॉज 2 3s are 6 and remainder is 1 is it is there. 2 2s are 1, so remainder is 1 and quotient is also 1. and यहाँ पे और ज़्यादा उसको डिवाइड हम नहीं कर पाएंगे, that is why it is the zero least digit. and हमको इसको तब तक रिपीट करना था स्टेप को जब तक कि ये जीरो पर नहीं आ जाता है, एंड दिस इज द जीरो मीन्स इससे आगे हम उसको और डिवाइड नहीं कर सकते. सो दिस इज द लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट एंड दिस इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट एज वी हैड डिस्कस्ड अर्लियर. सो टू अरेंज दिस नंबर we follow the reverse order. Okay, so 1 1 1 means 1 1 1 0 0 0 0 0 0. This is the बाइनरी नंबर ऑफ 56. 56 को कंप्यूटर इस तरह से समझता है 1 1 1 0 0 0 बिकॉज इफ द 56 इज द डेसिमल नंबर जिसका बेस 10 है, देन इट्स इक्विवेलेंट इज 1 1 1 एंड 0 0 0. इट्स अ बाइनरी नंबर. ओके, further we will discuss conversion of binary number to decimal and binary arithmetic also. In the next video we will discuss binary number to decimal number, conversion of binary to decimal. अभी हमने decimal to binary देखा, अब इसका opposite देखेंगे next video में, and binary arithmetics भी देखेंगे and the remaining topics. Okay, so thank you everyone.